Assalamu alaikum, बच्चों. Today we will start Streptococcus. I want to tell you some important points. Now as you know that we are conducting the revision classes, and inshallah ta'ala we will try our level best to revise each and every bacteria. I started with the gram-positive cocci and we discussed the Staphylococcus aureus. So inshallah ta'ala we will discuss and we will revise each and every bacteria. And I got some of your messages about the mycology and different other topics. Inshallah ta'ala we will discuss each and every topic. Just topic में बेटा आप लोग confusion है, we will discuss each and every topic. We will discuss the organisms that are responsible for causing meningitis. We will discuss the organisms that are responsible for causing different types of pneumonia. So inshallah ta'ala we will discuss each and every topic. मैंने बेटा start किया है कि हम एक sequence से चलें, ठीक है? मैं आपके ग्राम पॉजिटिव कॉक जब जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे आ जाएंगे. ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी आपके कवर होंगे, ग्राम नेगेटिव कॉक भी आपके कवर होंगे. इंशाल्लाह ताला वी विल रिवाइज ईच एंड एवरी बैक्टीरिया, एंड वंस यू विल कम बैक वी विल रिवाइज द OSPE. We will revise each and every practical, and we will inshallah ta'ala have a very extensive session about your past papers. So inshallah we will discuss each and every topic. आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो बेटा, जो आप लोगों की क्यूरीज हैं वो मुझे मिल रही हैं, और इंशाल्लाह ताला हम सारी के सारे ऑर्गेनिजम्स और सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे. So in my previous topic, I covered the Staphylococcus aureus, and today I'm going to cover Streptococcus. What are Streptococcus? Streptococcus are actually the gram-positive cocci. They are arranged in chains or pairs. As you know this, what is Staphylococcus? Staphylococcus means gram-positive bacteria that are arranged in clusters. Staphylococcus means the gram-positive cocci that are arranged in clusters, whereas the gram-positive cocci that are arranged in chains and pairs are called Streptococcus. Streptococcus means pairs or in chains, whereas Staphylo means clusters. So gram-positive cocci that are present in clusters are Staphylococcus, whereas gram-positive cocci that are arranged in chains or pairs are Streptococci. All Streptococci are catalase negative. This is a very important point. As you know, Staphylococcus are catalase positive organisms, whereas Streptococci are catalase negative. मैंने आपको जब बेटा बताया था कि whenever we will do the gram staining and we find the gram positive cocci, we will first do the catalase test. Catalase test is the benchmark test to differentiate between the gram positive cocci. And whenever we do the catalase test, the catalase positive organism will be Staphylococcus, whereas the catalase negative organism is Streptococcus. And how we will differentiate between the Staphylococcus Staphylococcus species? We will do the coagulase test, and the Staphylococcus aureus will be coagulase positive, whereas Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus saprophyticus will be coagulase negative. So catalase test will divide the gram-positive bacteria in Staphylococcus and Streptococcus. Staphylococcus are catalase positive, whereas Streptococci are catalase negative. These are the colonies of Staphylococcus on blood agar. Staphylococcus and Streptococcus, they both are cause complete hemolysis on the blood agar, and they are responsible for the beta hemolysis. Beta hemolysis means complete hemolysis. And whenever you will see this
picture, you can appreciate the gram-positive bacteria which are arranged in chains or in pairs. They are not present in clusters. As I showed you in the previous lecture, the Staphylococcus organisms are arranged in clusters or grape-like clusters, whereas you can appreciate that Streptococci are arranged in chains. Now how you will classify the Streptococci. Streptococci will be classified on the basis of the hemolysis. Alpha hemolysis is the partial or incomplete hemolysis, whereas beta hemolysis is actually complete hemolysis. And then comes the gamma hemolysis. Alpha hemolytic, partial, incomplete or green hemolysis forms a green zone around the colonies as a result of incomplete lysis of the red blood cells in the agar, and the organisms that causes the alpha hemolysis are Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridans. So organisms that are responsible for alpha hemolysis are Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridans. Now comes the beta hemolytic group. Beta hemolytic group is responsible for causing the complete hemolysis that forms a clear zone around the colonies, and there will be no agar around the colonies. There will be a clear zone because there will be complete lysis of the red blood cells, and staphylolysin O, staphylolysin S and exotoxin produced by the bacteria are responsible for causing the beta hemolysis, which causes the complete lysis of the red blood cells. So there will be clear zone around the colonies, as you can appreciate in some of these colonies that there is a complete clearing of the agar or the red blood cells. And staphylolysin O, staphylolysin S and exotoxin, which is present in the streptococci, are responsible for causing the lysis, of the red blood cells. And the beta hemolytic group is Streptococcus pyogenes and Streptococcus agalacti. And then comes the gamma hemolysis, which gamma hemolysis means no hemolysis. And the non-hemolytic group is Enterococcus faecalis and Streptococcus bovis. So let's revise. According to the hemolysis, the Streptococci are grouped into alpha hemolytic group, beta hemolytic group and gamma hemolytic group. Beta means complete hemolysis, alpha means complete hemolysis, alpha means partial hemolysis, beta means complete hemolysis, and gamma means no hemolysis. So first of all, we will start with the alpha hemolysis. Alpha hemolysis is incomplete hemolysis or green hemolysis, and the organisms that are responsible for causing the alpha hemolysis are Streptococcus pneumoniae and viridans group or the Streptococcus viridans. Then comes the beta hemolytic group. Beta hemolytic group, याद रखिएगा बेटा, Streptococcus pyogenes and Streptococcus agalacti. They are responsible for causing the beta hemolysis. And beta hemolysis is complete hemolysis, means there will be lysis of the red blood cells and there will be clearing around the colonies. So beta hemolytic group consists of Streptococcus pyogenes and Streptococcus agalacti. Then comes the gamma hemolysis. Gamma hemolysis means there will be no hemolysis, and the gamma hemolysis hemolytic group includes Enterococcus faecalis and Streptococcus bovis. Then comes the Lancefield grouping. The beta hemolytic streptococci are arranged into group A to U, known as Lancefield grouping. बेटा जब भी मैं आप लोगों से Lancefield grouping पूछती हूँ, आप लोग मुझे नहीं बताते. It can be asked in your vivas, it can be asked in your SEQs. So you must know the Lancefield grouping. It is grouped. They are grouped on the basis of the antigenic differences in the C carbohydrate. This is the Lancefield grouping, which is given in your books. So you must know the group A streptococci, group B streptococci, group D streptococci, and you must know the differences between these groups. So first of all, we will start group A. Group A is Streptococcus pyogenes. Okay? Group A is Streptococcus pyogenes. Although it is responsible for causing the beta hemolysis, but we
will not categorize it into the B group. Beta hemolysis is a different thing and B group is different. So Streptococcus pyogenes is group A streptococci. Whenever we will talk about the group A streptococci, we will talk about Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes causes beta hemolysis and it is bacitracin sensitive. Now comes the B group. B group is Streptococcus aguilecti and it is also responsible for causing the beta hemolysis and it is bacitracin resistant and heparate hydrolyzed. So whenever you will differentiate the streptococci on the basis of the hemolysis, you can differentiate. जैसे कि बेटा आपको पता है कि बीटा हेमोलिसिस कराने वाले कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्टेफाइलोकोकस and Streptococcus aguilecti. Now how you will differentiate that this organism is Streptococcus pyogenes and this organism is Streptococcus and this organism could be Streptococcus aguilecti. Actually you will do the bacitracin sensitivity. Whenever जब हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी देखेंगे ना बेटा, तो we will find out that Streptococcus pyogenes is bacitracin sensitive and Streptococcus aguilecti is bacitracin resistant. Whenever you will put the bacitracin discs on the around the colonies of Streptococcus pyogenes, you will see a clearing zone. It means they are sensitive to bacitracin, whereas Streptococcus aguilecti are bacitracin resistant. Now comes the D group. D group is Enterococcus faecalis and it can cause the alpha hemolysis or beta hemolysis, or it can also cause no hemolysis. So and the growth will be, and they can grow in 6.5% NaCl solution and they can be grow in hypertonic solution. And then comes the Streptococcus bovis. It can also produce alpha hemolysis and there could be no hemolysis and they will not grow in the hypertonic solutions in NaCl solution. So how you will differentiate the D group? D group is responsible for causing no hemolysis. We categorize it in the non-hemolytic group. But how you will differentiate it? The Streptococcus bovis can't be grown in the hypertonic solutions, whereas the Enterococcus faecalis can be grown in hypertonic solutions. So you will differentiate on the basis of the their growth in NaCl solution. Now comes the Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, we can't group it in A, B or D. So Streptococcus pneumoniae, as I told you, it is responsible for causing the alpha hemolysis, and alpha hemolysis, green hemolysis or incomplete hemolysis, and it is bile soluble. And Viridans group also causes alpha hemolysis, but it is not bile soluble. And Streptococcus pneumoniae can be inhibited by the optogen disc, and Streptococcus viridans can't be inhibited by the optogen disc. बेटा ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में. I am just revising these concepts. So first of all, whenever we will talk about the group A streptococci, we will talk about Streptococcus pyogenes. And Streptococcus pyogenes is bacitracin sensitive and it is responsible for causing beta hemolysis. Whereas Streptococcus aguilecti, we will group it into the B group, and whenever we will talk about the group B streptococci, we will be talking about Streptococcus aguilecti. It is also responsible for causing the beta hemolysis, but on the basis of hemolysis we can't differentiate it. We will differentiate it on the basis of the bacitracin sensitivity. So Streptococcus aguilecti is bacitracin resistant. Now how you will differentiate on the non-hemolytic group, which is group D, and it is responsible for for causing alpha hemolysis sometimes, and mostly it will not cause any it will not be responsible for any hemolysis. So we will differentiate it on the basis of their growth in the hypertonic solution. Enterococcus faecalis can grow in the hypertonic solution or in the NaCl solution, whereas Streptococcus bovis can't be grown in the hypertonic solution. Now, how you will differentiate the alpha hemolytic group? Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridans. You will differentiate it on the basis of their bile solubility. Streptococcus pneumoniae is bile soluble, whereas Streptococcus viridans is not bile soluble.
And Streptococcus pneumoniae can be inhibited by the optogen disc, whereas Streptococcus viridans will not be inhibited by the optogen disc. Now, I will ask some questions from you so that I have an idea that how you are absorbing these concepts. So, roll number 22088, Umar Ali Abbasi. Can you please tell me about the Lancefield grouping? How we will group the streptococci? Umar Ali Basi, can you please tell me about the Lancefield grouping? Where you people are? Roll number 22088, I am asking from you, tell me something about the Lancefield grouping. You can unmute yourself. बेटा रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि मैं बोलती जाऊं और आप लोग रिस्पॉन्ड ना करें. These are the revision classes. You should respond. Anyone else? Beta, what is Lancefield grouping? Beta, Aksa, Shoaib, Nimra, you people are just marking your attendance. कोई बच्चा मुझे आंसर भी तो करे ना. You people should answer me. What is Lancefield grouping? Muaz Hussain, can you please tell me about the group A streptococci? Okay, very good. They are based on the carbohydrate composition of the bacterial antigens. Name those groups. Very good. Okay, tell me about the group A streptococci. Never write S pyogenes. Always write streptococcus pyogenes. And how you will differentiate the group A and group B streptococci? How you will differentiate group A and group B streptococci? They both are responsible for causing the alpha hemolysis. Is it so? No. Streptococcus pyogenes, which we group in the group A streptococci, is responsible for causing the beta hemolysis, whereas Streptococcus pyogenes bacitracin sensitive group A, and they are responsible for causing the beta hemolysis. And group B are Streptococcus aguilecti. They are also responsible for causing beta hemolysis or complete hemolysis. So how you will differentiate the hemolytic group? Group A and group B are actually the hemolytic group. Very good. On the basis of the sensitivity to bacitracin disc, and group A, how group A will respond? How Streptococcus pyogenes will respond? Very good. Streptococcus pyogenes will be bacitracin sensitive, and Streptococcus aguilecti will be bacitracin resistant. Very good. Okay, tell me about the group D streptococci. And group D streptococci are actually the non-hemolytic group. Name the organisms that are
grouped in group D. Enterococcus faecalis and Streptococcus bovis. Very good. And how you will differentiate? We will differentiate them on the basis of their growth in the hypotonic solution or in the NaCl solution. And Enterococcus faecalis will grow in NaCl solution, whereas Streptococcus bovis will not. Now tell me how you will differentiate the alpha hemolytic group. And alpha hemolytic group is responsible for causing the alpha hemolysis or the green hemolysis. और कौन-कौन से organisms आते हैं बेटा alpha hemolytic group में? Yes, alpha hemolysis is incomplete or partial hemolysis or green hemolysis. Yes, Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridans. Yes, very good. How you will differentiate? On the basis of the optogen sensitivity. So Streptococcus pneumoniae will be optogen sensitive, whereas Streptococcus viridans will be optogen. Very good. Name the biosoluble organism. बेटा सकलैन, उसामा, अनुषा, उमेर, आप लोगों के अलावा और बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं? महनूर, हमना, वेरी गुड. आप लोगों के अलावा बेटा क्लास में और बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं? बच्चे कहाँ हो आप लोग सारे? यू शुड आंसर. ओके बेटा, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. और आप लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट एंटीजन्स बहुत ध्यान से सुनने हैं, ठीक है? आई विल रिवाइज देम. आप लोगों से पूछूंगी मैं, जो नहीं भी सुन रहे वो सुने प्लीज. Thank you. Now there are two important antigens of the beta hemolytic streptococci, and beta hemolytic streptococci are Streptococcus Streptococcus pyogenes and Streptococcus agalacti. The C carbohydrate determines the group of the beta hemolytic streptococci, and it is located in the cell wall. So C carbohydrate is actually present in the cell wall. ये हम लोगों ने जनरल बैक्टीरियोलॉजी में बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ बेटा. Now comes the M protein. M protein, which is a very important virulence factor, it determines the type of the group A beta hemolytic streptococci, and it protrudes from the outer surface of the cell and interferes with the ingestion by the phagocytes, and it is antiphagocytic. So the important virulence factors are C carbohydrate and M protein. M protein is actually antiphagocytic. It interferes with the ingestion of the by the phagocytes, and it is antiphagocytic. Strains of the Streptococcus pyogenes that produces M protein types are some are rheumatogenic, that are responsible for causing the rheumatic fever, whereas the strains of Streptococcus pyogenes that produces other M protein types are nephrogenic. They are responsible for causing acute glomerulonephritis. So M protein की जो बेटा types है ना, they are different. Some are responsible for causing the rheumatogenic or the rheumatic fever. Some are rheumatogenic and they are responsible for causing rheumatic fever, and some are nephrogenic and they are responsible for causing glomerulonephritis. Now we are going to discuss the group A streptococci, and as you know, the group A streptococci are Streptococcus pyogenes, and they are responsible for causing beta hemolysis, and they are actually beta hemolytic. They are the most important human pathogens. They are the frequent bacterial cause of pharyngitis and a very common cause of skin infections. बेटा जब भी आप लोगों को Streptococcus pyogenes का पूछा जाए ना,
एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये रखनी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सोर थ्रोट इन 90% ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, so streptococcus pyogenes is the most important cause of pharyngitis and it is the most important cause of pharyngitis and tonsillitis. So सबसे important cause, सबसे important and सबसे frequent cause क्या है बेटा pharyngitis या tonsillitis? It is streptococcus pyogenes. स्टेप्टोकोकस पायोजेंस के साथ आपने एसोसिएट करना है सोर थ्रोट को, हमेशा याद रखना. जैसे हम स्टेप्टोकोकस ऑरियस की बात करते हैं तो हम जहन में रखते हैं कि स्टेप्टोकोकस ऑरियस इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग स्किन इन्फेक्शंस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन. Just like Streptococcus aureus, you have to remember the Streptococcus pyogenes. It is a part of normal flora of the pharynx, and it is responsible for the 90% of the bacterial 90% of the bacterial pharyngitis. So it is the frequent bacterial cause of pharyngitis and the most important cause of the skin infections. A very important cause of the skin infections. The most important cause of the skin infections is Staphylococcus, whereas the most important cause, bacterial cause of the pharyngitis is Streptococcus pyogenes. सबसे ज्यादा वो बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा pharyngitis cause करता है वो है Streptococcus pyogenes. It adheres to the pharyngeal epithelium via the villi which is covered with the lipotecoic acids and M protein. There are many strains that have a hyaluronic acid capsule, and that is antiphagocytic. Habitat. Streptococcus pyogenes is found on the skin and oropharynx in small numbers. ठीक है, तो बेटा आपको जब हमने नॉर्मल फ्लोरा अगर आप देखें, Staphylococcus aureus is the part of the normal flora of your skin and nose. ठीक है, 30% बेटा नोज में जो ऑर्गेनिज्म आपके प्रेजेंट है नॉर्मल फ्लोरा का जो पार्ट है, इट इज Staphylococcus aureus. And Staphylococcus aureus is the normal flora of your skin and nose, whereas the Streptococcus pyogenes is the part of the normal flora of your skin and oropharynx. So that's why it is a very important cause of the pharyngitis. Now comes the pathogenesis. We discussed in Staphylococcus aureus, we discussed the pyogenic diseases and the non-pyogenic diseases or the toxin mediated diseases. Just like Staphylococcus aureus, we are going to discuss the pyogenic inflammation, exotoxin production and immunogenic conditions. Pyogenic inflammation, as I told you, it is also a very important part of the normal flora of the skin. Pyogenic inflammation is induced locally at the site of organism in the tissue, and the exotoxin production cause widespread systemic symptoms in area of the body where there are no organism. तो बेटा pyogenic inflammation उस साइड पे होगी जिस साइड पे वो ब्रीच करेगा स्किन को, ठीक है, at the site of infection mostly, whereas the exotoxin production will cause the widespread symptoms and in the areas where there will be no organisms. जब exotoxin production होगी ना बेटा, उन areas में और उन organs में manifestations आएंगी जहां पे organisms नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्किन में इस साइड यहाँ पे एक एब्सेस बन गई है, उसकी वजह से एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन हुई एंड देयर विल बी फीवर एंड देयर विल बी अदर साइंस एंड सिम्टम्स and they are actually because of the exotoxin production. Now comes the immunologic. Immunologic means which occurs when the antibody against a component of the organism cross reacts with the normal tissue or forms immune complexes that damage the normal tissue. तो बेटा इम्यूनोलॉजिकल जो है वो साइन सिम्टम्स कब आएंगे? जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे टिश्यूज भी, ठीक है. जैसे बेटा मैंने आपको अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि M protein which is present in the Streptococcus pyogenes is somehow similar to the M protein which is present in the myocardial cell wall. So जो हार्ट सेल्स के अंदर M प्रोटीन है ना, वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है जो कि स्टेप्टोकोकस पायोजेंस की वॉल के अंदर M प्रोटीन है. तो इसलिए बेटा जब हमारी बॉडी में M प्रोटीन विच इज एन एंटीजन, उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज बनती है ना बेटा, जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट करती हैं तो वो बेटा समटाइम्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि M प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट सेल्स
ये फॉरेन एम प्रोटीन है या आपकी अपनी एम प्रोटीन है, सो इट कैन क्रॉस रिएक्ट विद द आर नॉर्मल टिश्यूज एज वेल. So that's why in the rheumatic fever, रोमैटिक फीवर में क्या होता है बेटा, एक्चुअली वेलवुलर डैमेज है, ठीक है. इट इज ड्यू टू द एम प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट सेल्स. जो नॉर्मली हमारे हार्ट सेल्स में एम प्रोटीन प्रेजेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की एम प्रोटीन के साथ. तो जो हमारी एंटीबॉडीज या जो हमारा जब हम सेल में मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, तो जो उस एम प्रोटीन के अगेंस्ट एक्टिवेट होगी वो आपके अपने हार्ट सेल्स के एम प्रोटीन के अगेंस्ट भी एक्टिवेट होगी और टिश्यू डैमेज करेगी, ठीक है. And so some are the manifestations of the antibodies that cross react with the normal tissue and form immune complexes. इसी तरह बेटा rheumatic fever में क्या है कि bones and joints के अंदर आपके immune complexes बन जाते हैं, that they will deposit in the joints. और बेटा इसी तरह क्या है कि जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें भी क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विल बी डिपॉजिटेड इन द ग्लोमेरुलाई and after their deposition there will be signs and symptoms related to the urinary tract. So there are the pathogenesis will be categorized in the on the basis of the pathogenesis. Signs and symptoms are classified on the basis of the pathogenesis of the Streptococcus pyogenes. So there will be pyogenic inflammation, which is actually present at the site of the organisms, and which is induced locally at the site of the organism in the tissue. जहाँ पे organism है उस site पे जो है वो pyogenic inflammation होगी, whereas the exotoxin production will be widespread. And it will be present in all other organs where there will be no organisms. And then the third one will be immunological, which occurs when antibody against a component of the organism cross reacts with our normal tissues and form immune complexes that damage the normal tissue. The M protein of the Streptococcus pyogenes is very important because it is antiphagocytic, and but its capsule is composed of the hyaluronic acid, and it is also antiphagocytic. So M protein, which is a very important virulence factor of the Streptococcus pyogenes, is actually antiphagocytic. So it is a very important virulence factor, because our cell mediated immunity or the macrophages will not phagocyte the Streptococcus pyogen organisms because of this M protein, because it is antiphagocytic. Now the inflammation related enzymes. हमने बेटा एंजाइम्स पढ़े थे ना उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में. हमने जब स्टेफिलोकोकस ऑरियस के विरलेंस फैक्टर्स पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था बेटा, some are the cellular components, some are the toxins, and some are the enzymes. तो अभी आप लोगों ने बेटा क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है मोस्टली जो विरलेंस फैक्टर्स हैं उसके, वो क्या है, सी, कार्बोहाइड्रेट एंड एम प्रोटीन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एंजाइम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द पैथोजेनेसिस. Hyaluronidase degrades the hyaluronic acid, which is a ground substance of the subcutaneous tissue, and this hyaluronidase is known as a spreading factor because it will facilitate the rapid spread of the Streptococcus pyogenes in the skin infections, and it is responsible for causing cellulitis. So Streptococcus pyogenes will release the enzyme which is called the hyaluronidase, and the hyaluronidase will degrade the hyaluronic acid, which is a ground substance of the subcutaneous tissue. जब बेटा hyaluronidase degrade कर देगा hyaluronic acid का जो कि आपके subcutaneous tissue में present है, then the Streptococcus pyogenes will spread in the subcutaneous tissue. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो बेटा हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट है, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है, उसे डिग्रेड करेगा हाइलुरोनिडेज. जब हाइलुरोनिडेज उसे डिग्रेड कर देगा तो बेटा जैसे जैसे वो डिग्रेड करता जाएगा वैसे वैसे वो आगे फर्दर सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्प्रेड करता जाएगा. तो Streptococcus pyogenes will spread on the basis of the hyaluronidase which it produces, and it will degrade the hyaluronic acid which is present in the subcutaneous tissue. जैसे जैसे वो हाइलुरोनिडेज degrade करता जाएगा hyaluronic acid को, it will spread in the subcutaneous tissue. So it is the spreading factor because it facilitates the rapid spread of the Streptococcus pyogenes in the skin infections.
Number two is streptokinase. Streptokinase, as you know, is a fibrinolysin, and it activates the plasminogen to form the plasmin, which dissolves the fibrin clots, thrombi, and emboli. And then comes the DNase. DNase degrades the DNA in exudates and in or the necrotic tissue. Now comes the toxins and hemolysis. एरिथ्रो अभी बेटा हमने बात की सेल वॉल कंपोनेंट्स की. सेल वॉल कंपोनेंट्स आप लोग लिखते जाओ. सेल वॉल कंपोनेंट्स आर C carbohydrate and M protein, and we talk about the certain enzymes. Enzymes are hyaluronidase, streptokinase, and DNase, whereas the toxins are erythrogenic toxin, which causes the rash of the scarlet fever, and the mechanism of the toxin is same as that of the toxic shock syndrome. And the as I told you, the toxic shock syndrome toxin is a super antigen. Now what is the super antigen? Super antigen is an antigen. Whenever it enters the body, it will stimulate the cell mediated immunity, and cell mediated immunity is somehow activated in very large amounts. तो जब वो सुपर एंटीजन जाता है ना बॉडी में, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है. सो द साइटोकाइन्स आर रिलीज इन लार्ज नंबर. द इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, they are released in large numbers. So cytokines बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं. So that's why it is called super antigen. Super antigen means like it is a super means just like superpowers. It will activate the immune system in very large amount. So super antigen is somehow really a super cell which will initiate the cell mediated immunity, and in large numbers cytokines will be released in the blood. And what is the importance of streptolysin O? It is antigenic and antibody to streptolysin antibody to streptolysin O develops after group A streptococcal infections, and the titer of ASO antibody can be important in the diagnosis of the rheumatic fever. Now comes the streptolysin S. It is a hemolysin that is not activated by oxygen, and it is oxygen stable, and it is not antigenic. Now comes the pyogenic exotoxin A. It is a toxin that is responsible for causing, for the most of the cases of the Staphylococcus toxic shock syndrome. It is the same mode of action as does the Staphylococcus toxic shock syndrome toxin. It is a super antigen that causes a release of the large numbers of the cytokines from hyper T cells and macrophages. And now the exotoxin B, it is a protease that rapidly destroys tissues and is produced in large amounts by the strains of the Streptococcus pyogenes. So it is called flesh-eating streptococci that causes the necrotizing fasciitis. So exotoxin B is responsible for the rapid destruction of the tissues, and it is released in large amounts by the strains of the Streptococcus pyogenes. So streptococci are also called the flesh-eating bacteria. So it is Streptococcus pyogenes की कुछ strains जो हैं उन्हें हम कहते हैं flesh eating streptococci because of the exotoxin B, which is a protease that will rapidly destroy the proteins in the tissues, and that will rapidly destroy the tissues. So अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? We discussed the pathogenesis of streptococci and mainly the pathogenesis of the Streptococcus pyogenes. अब आप लोग मेरे साथ रिवाइज करें, मैं आप लोगों को रिवाइज कराती हूँ बेटा. रिवीजन का बेटा बार बार इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जितना ज्यादा आप माइक्रो में रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को रिटेन करेंगे. आप जितनी कम रिवीजन करेंगे उतना ही रिटेन नहीं करेंगे, और जैसे ही आपके पास कोई सिनेरियो आएगा यू विल बी कंफ्यूज. जब आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन की होगी, सो you will be able to differentiate between different organisms, different bacteria, different parasites, different viruses. So the key of getting good grades in pathology is revision. Same goes to pharmacology. तो आप लोगों ने रिवाइज बहुत करना है बेटा. जितना रिवाइज करोगे, अपने नोट्स बनाओ, अपनी बुक्स के ऊपर नोट्स बनाओ और बार बार उसको रिवाइज करो. और ये ऑर्गेनिज्म जो मैं आपको करा रही हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा कभी हुआ नहीं कि ग्राम पॉजिटिव कॉका से कोई क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम में.
Just give me 1 minute. I think our second lecture is start now. जी मेरा ही है तो प्रैक्टिकल अभी तो नहीं नहीं यही करवाना So we discussed the pathogenesis of Streptococcus pyogenes. मैंने आपको बताया बेटा कि जो pathogenesis है ना Streptococcus pyogenes की, it is based on the location. Some there will be pyogenic inflammation on the site of the bacteria. जहाँ पे वो present है उस site पे क्या होगा? There will be pyogenic inflammation and due to the production of the exotoxin, there will be widespread systemic symptoms. तो जब Streptococcus pyogenes invade करेगा उस जगह पे क्या होगी? Pyogenic inflammation, and due to the exotoxin which is produced by the Streptococcus pyogenes, there will be widespread systemic symptoms, but in those areas where there will be no organisms. And then the immunological symptoms, signs, symptoms, and immunological signs, symptoms are because of the immune complexes that will form against this organism, and they will cross react with the normal tissues, and those immune complexes damage the normal tissues. And as I told you, the very important cellular components of the or the virulence factors of the Streptococcus pyogenes are M protein and C carbohydrate. M protein is antiphagocytic. It is very important. जो capsule है बेटा, it is antiphagocytic. And then comes the inflammation related enzymes. Inflammation related enzymes में सबसे ज़्यादा important क्या है? Hyaluronidase, which will degrade the hyaluronic acid, which is present in the subcutaneous tissues, and it is the spreading factor. Because of this hyaluronidase, it will spread in the subcutaneous tissues. And then comes the streptokinase and the DNase. And the toxins which are released and they are responsible for causing the hemolysis are erythrogenic toxin, which is a very important cause of the scarlet fever, and it is the action is similar to that of the toxic shock syndrome toxin. And toxic shock syndrome toxin and the erythrogenic toxin, they both are super antigens. Then comes the streptolysin O. Streptolysin O are very important in the diagnosis of a rheumatic fever. And streptolysin S, which is a hemolysin, and it is not activated by the inactivated by oxygen, and it is oxygen stable. Pyogenic exotoxin A, it is same as that of the toxin of the toxic shock syndrome and erythrogenic toxin. It is a super antigen and it will release large amount of cytokines. And exotoxin B is a protease, and it will degrade the proteins in the tissues, and it is when it produced in large amounts by the strains of the Streptococcus pyogenes, and some of the strains are called the flesh-eating Streptococcus because of this exotoxin A, and it is responsible for causing the necrotizing fasciitis. Now comes the sign and symptoms, which are very important. Number one and the most important sign and symptom is pharyngitis. As I told you, Streptococcus pyogenes is responsible for causing the pharyngitis or the sore throat. Sore throat के साथ हमेशा सबसे पहला organism आपने देखना है ना बेटा, it will be Streptococcus pyogenes, because it is the most important bacterial cause of the sore throat or the pharyngitis. The most common cause of the bacterial cause of sore throat is Streptococcus pyogenes, and pharyngitis is characterized by inflammation, exudation, fever, leukocytosis, and tender cervical lymph nodes. अच्छा बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, जो सोर थ्रोट होता है ना बैक्टीरियल कॉजेस की वजह से और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से, वो उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है. और जब आप पेशेंट को कहते हैं ना कि बेटा आप अपना जो है वो माउथ ओपन करें, व्हेन यू विल सी द थ्रोट विल बी रेड, swollen, tonsils will be swollen and there will be exudates, और पस आपको नजर आती है टॉन्सिल्स पे. ठीक है. So और जब whereas in the viral pharyngitis the scenario is somehow different. Viral pharyngitis में पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड रेड नहीं होता थ्रोट. जब आप बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस और वायरल फेरेंजाइटिस को कंपेयर करते हैं ना बेटा, तो जो बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है ना उसमें फीवर भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सुडेशन भी बहुत ज्यादा होती है, ल्यूकोसाइटोसिस भी होता है. ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट इन ब्लड, एंड दे विल बी
tender and red pharynx, whereas in the viral pharyngitis the fever is less fever there will be low grade fever and जो उसकी इन्फ्लेमेशन है ना बेटा फेरिंक्स की वो कम होती है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस and there will be tender cervical lymph nodes. Cervical lymph nodes भी tender होते हैं and if untreated it can if untreated spontaneous recovery can occur in 10 days, but you have to give the antibiotics to the patient because of the complications that can like post streptococcus glomerulonephritis and post streptococcus rheumatic fever. However, so mainly the signs and symptoms are related to the pharynx, but it can extend to the middle ear and it can cause the otitis media. It can cause sinusitis. Mastoiditis is inflammation of the mastoid, and meningitis. Rheumatic fever may occur especially following the pharyngitis. So you have to give the antibiotics. You have to give the antibiotic cover to the patient. So the most important clinical sign clinical symptom, sign or symptom is pharyngitis. And now we are talking about the skin and soft tissue infections. As I told you, जब हमने पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन की बात की तो आपको मैंने बताया कि बेटा उस साइट पे पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होगी, तो साइट मोस्टली क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है, उसके या स्किन हो सकती है, ठीक है, उसके बाद जो बाकी ऑर्गन्स में साइन सिम्टम्स आएंगे इट विल बी ड्यू टू द exotoxin production or the immunological responses or due to the deposition of the immune complexes. Now we are talking about the skin and soft tissue infections. Skin and soft tissue infections बेटा हमने Staphylococcus aureus में भी की, because और अब यहाँ भी करेंगे, because Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes, they both are the part of the normal flora of your skin. Whereas the normal flora of the nose is Staphylococcus aureus and the normal flora of your oral pharynx is Streptococcus pyogenes. So स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस की जो कॉज हैं बेटा स्टेप ऑरियस भी हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस भी हो सकती है. Cellulitis, it is responsible for causing cellulitis. Cellulitis, why? Because it will release a hyaluronidase enzyme, and the hyaluronidase is responsible for degrading the hyaluronic acid, and due to this hyaluronic acid it is called the due to the hyaluronidase it will degrade the hyaluronic acid and it is called the spreading factor. So cellulitis is due to the release of the hyaluronidase. Now comes the erysipelas. Erysipelas is an acute, sometimes recurrent disease caused by the bacterial infection, characterized by large raised red patches on the skin. I will show you the picture. Then comes the necrotizing fasciitis, which is due to the Streptococcus exotoxin B. And as I told you, the exotoxin B is actually responsible for the degradation of it is actually a protease, so it will degrade the tissues and it is responsible for causing the necrotizing fasciitis. And necrotizing fasciitis is also called the Streptococcus gangrene. Now comes the impetigo. Impetigo हमने Streptococcus aureus में भी पढ़ा. It is a form of the pyoderma and it is a superficial skin infections characterized by honey colored crusted lesions. So the most important skin and soft tissue infections are cellulitis, erysipelas, which is characterized by red patches on the skin, necrotizing fasciitis due to exotoxin B, because exotoxin B is a protease and it will degrade the normal tissues. And then comes the impetigo, which is a form of the pyoderma. It is a superficial skin infection characterized by honey colored crusted lesions. This is erysipelas. As I told you, it is responsible for causing the red patches on the skin. This is necrotizing fasciitis, or that's why streptococci are called flesh-eating bacteria, because they will degrade the proteins in the tissues. And the other in the other organs there could be endometritis, which is an inflammation of the endometrium, which is also called puerperal fever, a serious infection of the pregnant woman, and the woman can undergo sepsis. And then comes the immune-mediated post-streptococcal acute glomerulonephritis, which can occur especially following the skin infections caused by certain M proteins types of Streptococcus pyogenes.
और बेटा एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट कॉमनली जो इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस है ना, अगर फेरेंजाइटिस की वजह से होंगी, इट विल बी रूमेटिक फीवर, एंड due to the skin infections it will be immune mediated post streptococcal glomerulonephritis. So they could be both, but मोस्टली फेरेंजाइटिस के साथ एसोसिएट होती है रूमेटिक फीवर, एंड स्किन इन्फेक्शंस के साथ एसोसिएट होती है इम्यून मीडिएटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि आफ्टर फेरेंजाइटिस दे कुड बी बोथ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस रूमेटिक फीवर. पर ज्यादातर जो इम्यून मीडिएटेड डिजीज जो है फॉलोइंग द फेरेंजाइटिस होती है, इट इज रूमेटिक फीवर. Now comes the post-streptococcal non-suppurative diseases. Non-suppurative diseases mean not pyogenic diseases, and they are actually rheumatic fever and post-streptococcal glomerulonephritis. They are due to the immunological responses. They are due to the immune complexes that are formed against the antigens, and they are deposited in the tissues, and due to their deposition there will be signs and symptoms. These are the disorders in which a local infection with the group A streptococci is followed weeks later by an inflammation in an other organ, and it is actually due to the immunological response to the streptococcal M proteins that cross react with the human tissues. मैंने आपको बताया कि बेटा M proteins जो कि प्रेजेंट है स्टेप्टोकॉकस पायोजेंस में, वो बिल्कुल वैसी है जो कि आपके नॉर्मल ह्यूमन टिश्यूज में भी है. Some strains of the Streptococcus pyogenes bearing certain M proteins are nephrogenic, ये हमने पहले भी पढ़ा है, and are responsible for causing acute glomerulonephritis. And other strains bearing different M proteins are rheumatogenic and are responsible for causing the acute rheumatic fever. कुछ M proteins जो हैं वो glomerulonephritis कराते हैं, कुछ जो हैं वो rheumatogenic हैं, they are responsible for causing acute rheumatic fever. Now comes the acute glomerulonephritis. 2 to 3 weeks after the skin infections by certain group A streptococcal type in children, M protein type 49 causes acute glomerulonephritis most frequently. Acute glomerulonephritis is more frequent after the skin infections. ये वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले कही है कि acute glomerulonephritis is mostly after the skin infections. It is not mostly after the pharyngitis. Pharyngitis के बाद mostly क्या होगा, rheumatic fever होता है. So post glomerulonephritis is mostly or frequently followed by the is after the skin infections. So skin infections will be followed by the post glomerulonephritis. The most striking features are hypertension, edema of the face, which is also called the periorbital edema, and edema on the ankle, smoky urine, very important due to the red cells in the urine, and most patients recover completely. The disease is initiated by the antigen antibody complexes on the glomerular basement membrane. And now comes the acute rheumatic fever. Approximately 2 weeks after a group A streptococcal infection, usually pharyngitis. वही बात दोबारा आ गई, मैंने आपको कहा है कि after pharyngitis mostly क्या होता है, acute rheumatic fever. Rheumatic fever is characterized by fever, migratory polyarthritis. What is migratory polyarthritis? On the different joints there will be arthritis, and migratory means, so for example अगर जो है वो आपका ये एल्बो आपका रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व है सबसे पहले, तो उसके बाद जो आपका एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर आपका शोल्डर जॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस. पॉली मींस डिफरेंट जॉइंट्स आर इन्वॉल्व. देन कम्स द कार्डाइटिस. Carditis is the carditis damages the myocardial and endocardial tissues, especially the mitral and aortic valves. And uncontrolled spasmodic movement of the limbs or face may also occur. But the most important features are fever, arthritis, carditis. Carditis is actually the inflammation of the heart, and it can damage the myocardial and the endocardial tissues, especially the mitral and aortic valves. तो valvular involvement है, मैंने आपको पहले भी बताया है. So the most important are fever, carditis, and polyarthritis. ASO titers and the erythrocyte sedimentation rates are elevated. Erythrocyte sedimentation rate is ESR.
Rheumatic fever is due to immunological reaction between the cross-reacting antibodies to certain M proteins and cross reacts with joints, hearts and ब्रेन टिश्यूज. तो मोस्टली एम प्रोटीन जो आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में, जॉइंट्स में और ब्रेन में. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एम प्रोटीन जहाँ जिन जिन ऑर्गन्स में है वो बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ द एंड प्रोटीन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस. सो जब बेटा आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करता है ना, तो वो जब एम प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की, तो जो हमारी एम प्रोटीन है वो समझता है कि ये भी फॉरेन एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट भी वो एक्ट करता है, उसके अगेंस्ट भी वो क्रॉस रिएक्ट करता है. दैट्स व्हाई देयर विल बी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द जॉइंट्स, हार्ट एंड ब्रेन टिश्यूज. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ जिसको नहीं भी समझ आई. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जब आपकी बॉडी में एंटर होता है, एम प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, एम प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेलेंस फैक्टर. जो एम प्रोटीन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के अंदर मौजूद है, उसके स्ट्रक्चर में है वो, और आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जब उसको रिकग्नाइज करेगा, जो आपके सेल में रेडिएटिव इम्यूनिटी है, जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स उस एम प्रोटीन के अगेंस्ट एक्ट करेगा, तो जो एम प्रोटीन प्रेजेंट है आपके हार्ट के अंदर, जॉइंट के अंदर और ब्रेन टिश्यूज के अंदर, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के अंदर मौजूद है. तो जब बेटा इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना अगेंस्ट द एम प्रोटीन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, तो बेटा वो फॉरेन एंटीजन है हालांकि, लेकिन वो आपके जो सेल्स हैं वो एम प्रोटीन जो आपके अपने हार्ट, जॉइंट और ब्रेन टिश्यूज में है उसके अगेंस्ट भी एक्ट करेंगी, उसे भी समझेगी कि ये हम फॉरेन एंटीजन है. ठीक है, जब आप लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ी थी तो आप लोगों ने शायद ये पढ़ा हो व्हाट आर द सेल्फ एंटीजन्स. ठीक है, व्हाट आर द फॉरेन एंटीजन्स. सेल्फ एंटीजन्स वो एंटीजन्स होते हैं जो कि बड़ी अर्ली एज में नेटल लाइफ में प्रेजेंट हो जाते हैं, और वो एंटीजन जब प्रेजेंट हो जाते हैं ना तो आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है दीज आर द सेल्फ एंटीजन. एंड फॉरेन एंटीजन्स आर दोज एंटीजन्स व्हिच आर नॉट एक्सपोज्ड, जो कि बाहर से आते हैं और आपकी बॉडी कहती है नो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय, दिस इज नॉट माय पार्ट, दिस इज अ फॉरेन एंटीजन. सो उसके अगेंस्ट आपकी सेल में रेडिएटिव इम्यूनिटी एक्ट करती है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है. तो इसमें क्या है बेटा कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट जब एक्ट करता है तो अपने एंटीजन के अगेंस्ट भी एक्ट करना शुरू हो जाता है. जैसे कि जो एम प्रोटीन प्रेजेंट है ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की, वो बिल्कुल सेम है जो कि प्रेजेंट है आपके हार्ट, ब्रेन सेल्स में और जॉइंट्स में. तो जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करता है ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की एम प्रोटीन के अगेंस्ट, वो अपनी एम प्रोटीन के अगेंस्ट भी एक्ट करता है. वो समझता है कि जो एम प्रोटीन हार्ट के अंदर, जॉइंट के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर है वो भी फॉरेन एंटीजन है, उसे सेल्फ एंटीजन नहीं वो समझता, उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. तो बेटा उसके अगेंस्ट जब वो सेल्फ रिएक्ट करेगा ना, it will damage the heart cells or the joint cells or the brain cells. So this is the basis of the post-glomerular nephritis or the post-streptococcal glomerulonephritis and post-streptococcus rheumatic fever. ठीक है, यहां तक बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है so that we can move forward to the lab diagnosis. Do you have any questions till now? Respond. बच्चों रिस्पॉन्ड करो जल्दी से. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में बेटा अभी? एनी कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू. नाउ कम्स द लैब डायग्नोसिस. लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या है बेटा? सैंपल. ठीक है, मैंने आपको बताया कि कभी भी आप लोगों ने लैब डायग्नोसिस करनी है तो सबसे पहले आपने क्या लेना है? सैंपल लेना है. ठीक है, सैंपल कहां से लोगे? From any skin lesion from the wound, the stain smears from the skin or the wounds that reveal streptococci are diagnostic. सबसे पहले आप उस जगह से सैंपल लोगे जहां पे आपको लगता है कि कोई लियन है, ये वूंड है. और इसी तरह जब आप देखोगे फेरेंजाइटिस है पेशेंट को जो कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ द बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, तो आप क्या लोगे? थ्रोट स्वैब लोगे. ठीक है, या आप स्किन लियन से सैंपल लोगे या आप क्या करोगे? थ्रोट स्वैब लोगे.
The cultures of the swabs from the pharynx or the leon on the blood agar plate show small translucent beta hemolytic colonies in 18 to 48 hours, and it is inhibited by the bacitracin disc, and they are likely to be group A streptococci. The rapid test detects the bacterial antigens in the throat swab specimen, and agglutination on the colored latex particles occurs if a group A streptococci are present in the group throat swab. How you will diagnose on the basis of serology. ASO titers are high soon after the group A streptococcal infections in patients suspected of having rheumatic fever, and elevated ASO titer is typically used as evidence of the previous infection. अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे लैब डायग्नोसिस में? आप सैंपल लेंगे किस साइड से, जिस साइड पे आपको जिस साइड से आपने लेना है. फॉर एग्जांपल अगर वुंड है या कोई स्किन लेना है तो आप वहां से सैंपल लेंगे, ठीक है. स्किन स्वैब लेंगे. अगर आपको लगता है कि पेशेंट को फेरेंजाइटिस है तो आप क्या करेंगे? थ्रोट स्वैब लेंगे. अब जब आप स्वैब लेंगे तो उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको ब्लड एगर पे कल्चर करोगे. जब ब्लड एगर पे कल्चर करोगे आफ्टर 14 टू 48 आवर्स जब आप उसको देखोगे आफ्टर एन इंक्यूबेशन, तो आप देखते हो बेटा कि ब्लड दे विल बी बीटा हेमोलिसिस. कॉलोनीज के अराउंड क्या होगा? हेमोलिसिस होगा, कंप्लीट हेमोलिसिस होगा. दे विल बी क्लियरिंग. यहां तक बात आ गई. पहले सैंपल लिया, फिर आपने उसको कल्चर किया. कल्चर करोगे तो देखोगे देयर विल बी बीटा हेमोलिसिस. नंबर 3, यू विल टेक द कॉलोनीज एंड आप क्या करेंगे? ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है. And whenever you will do the gram staining, after the gram staining, you will see under the microscope, you will find the gram positive cocci in chains. Okay, not clusters. Gram positive cocci in chains. Then you will do the bench test, which is catalase, and catalase will be negative. Okay. सबसे पहले क्या करोगे? स्पेसिमन लोगे. दूसरी बात, कल्चर करोगे तो बीटा हेमोलिसिस देखोगे. और उसके बाद क्या करोगे? ग्राम स्टेनिंग करो. ग्राम स्टेनिंग पे क्या मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव कॉकाई इन चेन्स. Number 4 is bench test, which is catalase. You will do the catalase and catalase will be negative. It is catalase negative. Then you will do the bacitracin test. And जब bacitracin test करोगे बेटा तो आपको क्या नजर आएगा? There will be bacitracin sensitivity you will see. तो bacitracin disc जहां जहां आप लगाएंगे वहां वहां क्लियरिंग हो जाएगी. So they will be inhibited by the bacitracin. तो अब आपके पास क्या क्या 5 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं. सबसे पहले तो आप सैंपल लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? कल्चर करोगे, बीटा हेमोलिसिस देखोगे. उसके बाद आप क्या करोगे? ग्राम स्टेनिंग करोगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव कॉकाई इन चेन्स मिलेंगे, ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे कैटलेस टेस्ट, एंड कैटलेस टेस्ट विल बी नेगेटिव. उसके बाद क्या करोगे? बेसिट्रेसिन डिस्क लगाओगे, एंड बेसिट्रेसिन डिस्क they will be inhibited by the bacitracin. And जब आप ASO टाइटर करोगे तो ASO टाइटर will be raised, ठीक है. These are the 5 very important points. आप लोगों को तो बेटा अब तक इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है आपने उसको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना. सबसे पहले आप लोगों ने स्पेसिमन लेना है, फिर आप लोग उसे कल्चर करोगे. कल्चर करने के बाद आप लोग ग्राम स्टेनिंग करते हो. ग्राम स्टेनिंग के बाद आप लोगों के कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हैं, ठीक है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट्स के साथ लिखते जाओ तो कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं कर सकता. Now comes the treatment. All group A streptococci are susceptible to penicillin G, but neither rheumatic fever nor acute glomerulonephritis patients benefit from penicillin after onset. In mild group A streptococcal infection, oral penicillin B can be used. In penicillin allergic patients, you will always give erythromycin or one of the long acting derivatives, for example, azithromycin. So this is Streptococcus pyogenes. Do you have any questions till now? हमने अभी तक क्या पढ़ा? सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की. लेंसिफिड ग्रुपिंग मैंने आपको कराई है. पैथोजेनेसिस हमने किया. हमने पूरा कंप्लीट किया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को. अगर अभी भी किसी को इस टॉपिक के से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं बेटा, यू कैन आस्क. वी हैव आई थिंक 7 to 8 minutes left. Do you have any questions? बच्चों, do you have any questions?
or everything is clear? Okay, beta. Thank you very much.